हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और आज के सेशन के अंदर लेट्स सी व्हाट वी हैव डन इन आवर लास्ट सेशन। लास्ट सेशन वाज ऑन सैटरडे दैट वी परफॉर्म्ड। सो लेट्स सी। तुमा बेटा, आई होप आपने प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना शुरू कर दिए। आई एम होपिंग दैट और यू कैन कवर द प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स सारे शॉर्ट के ऊपर। आप वन बाय वन डेली आप होपफुली देख रही हैं सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अगर आपको कोई रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, तो यू कैन व्हाट्सएप मी एज वेल, यू कैन आस्क ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। और ताकि चीजें कवर अप करें जल्दी जल्दी अब, ठीक है, ताकि चीजें जल्दी से बैलेंस में आए और यू आर बैक ऑन ट्रैक इन कंप्यूटर साइंस। अच्छा जी, सो इन आवर लास्ट सेशन वी वर टॉकिंग अबाउट, बच्चों हम लोगों ने फॉर लूप की बात करी थी। We performed a small game as well. We played a small game as well about for loop. Then we performed few questions like we performed the counting in a for loop. Then we calculated the highest and lowest. And I told you people that whenever we need to calculate the highest, whenever we need to calculate the lowest, so these are the formulas to calculate the highest and the lowest. और I told you people that ये हमेशा same रहेंगे। आफ्टर दिस बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे एक एवरेज भी निकाली थी, हाईएस्ट भी निकाला था। वी परफॉर्म मल्टीपल थिंग्स इन दैट क्वेश्चन। और फिर हम लोगों ने एक आखिरी में सवाल परफॉर्म किया था, दैट वाज दैट वी नीड टू इनपुट 50 नंबर्स एंड वी नीड टू जस्ट डिस्प्ले, क्या डिस्प्ले करना था, वी नीड टू डिस्प्ले द एवरेज ऑफ द पॉजिटिव नंबर्स ओनली। So we need to display the average of the positive numbers only in that question. ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आज। And today we are going to start with our new loop, and we call that loop as while, do and while do. Repeat until both the loops, दोनों loops हम लोग one by one आज की क्लास के अंदर देखेंगे। So let's start with the question. The question is, input series of numbers and your loop should end when user enters -1. Display total. So the question is simple one, आसान सा सिंपल सा सवाल है हमारा। यहाँ पे एक सवाल क्या है, हमें एक इनपुट करवानी है। क्या इनपुट करवानी है? अ सीरीज ऑफ नंबर्स। ये सीरीज ऑफ नंबर्स एंड कब होगी? when the user is going to enter -1. And what we need to display, we just need to display total. जब यूजर -1 एंटर कर दे तो हमारा लूप एंड हो जाएगा। अगर वो कोई और नंबर एंटर करता है, लाइक यूजर ने एंटर कर दिया 5, 10, 25, तो हमें इन सब नंबर्स को क्या करना है? टोटल करना है। और फिर हमें टोटल करके क्या करवाना है? डिस्प्ले करवाना है। तो इन दिस क्वेश्चन बच्चों वी आर गोइंग टू यूज अ न्यू लूप एंड वी कॉल दैट लूप एज प्री कंडीशन लूप। हम लोग यहाँ पे while लूप यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड अ प्री कंडीशन लूप। एंड ये लूप बच्चों आपके पास एंड होता है when the condition is false। जब आपकी कंडीशन false होगी तो ये लूप आपका क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू फोकस ऑन।
ये लूप एंड होता है व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। तो हमें एक ऐसी कंडीशन बनानी है कि यूजर जब -1 एंटर करे तो आवर कंडीशन शुड बी क्रिएटेड लाइक इट शुड बी क्रिएटेड एज फॉल्स, सो दैट आवर लूप इज गोइंग टू बी एंडेड। अब मैं बिफोर वी स्टार्ट आप लोग से सवाल है बच्चों, बिफोर वी स्टार्ट मैंने एक सवाल किया आप लोग से, सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप हर बच्चा मुझे यहां पे जवाब दे देगा इस सवाल का। एंड दैट क्वेश्चन इज 20 is not equals to -1, true false? इट्स ट्रू और फॉल्स? जल्दी से मैक चैट पे लिख के बताएं। 20 is not equals to -1। ठीक है, आई एम हैविंग माय आंसर्स कि सर दिस इज ट्रू। तो हमारा जो लूप है दैट इज द व्हाइल लूप। व्हेन दिस कंडीशन इज ट्रू आपका लूप बच्चों रन करेगा, चलेगा। मैंने एक और कंडीशन यहां पे लगाई, लेट्स से द कंडीशन इज -10 इज नॉट इक्वल्स टू -1। ये कंडीशन क्या है, ट्रू फॉल्स? तो सर दिस इज ऑल्सो ट्रू। मैंने एक और कंडीशन लगाई यहां पे, लेट्स से -20 इज नॉट इक्वल्स टू -1। दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। मैंने यहां पे एक और कंडीशन लगाई, -1 इज नॉट इक्वल्स टू -1। सो बच्चों दिस कंडीशन इज, ये कंडीशन क्या है आपकी, दिस कंडीशन इज फॉल्स। ये हमारी कंडीशन फॉल्स है। ऑफ कोर्स -1 इज नॉट इक्वल्स टू -1 गलत बात है, दिस इज फॉल्स। लेकिन आप लोग को पता है इन सूडो कोड्स व्हेनेवर वी आर परफॉर्मिंग सूडो कोड्स द सिंबल फॉर not equals to is not this one. The symbol for not equals to is this one. So let's start the code. मैंने यहाँ पे कुछ अपने variables declare करवाए। I declared few variables. I need to perform totaling. I need to input a number and I define the data type as integer. Now you people know that whenever we need to perform totaling, total is always initialized with 0। जब भी टोटलिंग करनी हो, काउंटिंग करनी हो, हाईएस्ट निकालना हो, the variable is being initialized with 0 and whenever you need to calculate the lowest we initialize the variable with the highest value। ये बातें मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं बच्चों ताकि आप लोग के माइंड में बैठ जाए, आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाए ये बातें कि यू शुड नो। रात को 3 बजे भी अगर मैं उठा के साहब को बोलूं कि व्हाइल लूप एंड कब होता है तो साहब को बोलना चाहिए कि सर जब कंडीशन फॉल्स होती है। ठीक है, सो आप लोग की चीजें ये माइंड में बैठ जानी चाहिए। सो मैंने यहां पे इनिशियलाइज करवाया टोटल विल बी इक्वल्स टू 0। नाउ मैंने यूजर से रिक्वेस्ट करी आउटपुट enter a number or -1 to end input num। अब हमारे पास बच्चों जो यूजर है, अब मैंने अपनी कंडीशन क्रिएट करी। आई क्रिएटेड माई कंडीशन राइट ओवर हियर दैट वाज व्हाइल num not equals to -1 do। सो दिस इज द कंडीशन बच्चों दैट वी हैव। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द कंडीशन, दिस इज आवर कंडीशन। और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी आपकी तो आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब लूप के अंदर बच्चों में आया, लेट्स से यूजर एंटर्ड 5। मैंने यहां पे कंपेयर किया 5 इज नॉट इक्वल टू -1, द कंडीशन इज ट्रू, तो मेरा लूप चलेगा, मेरा लूप चला। मैंने फौरन यहां पे टोटलिंग कर ली, दैट विल बी टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस नम।
टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नम, तो मैंने फौरन यहां पे क्या कर ली, टोटलिंग कर ली। अब देखिए दो लाइनें मैंने छोड़ के यहां पे क्या लिख दिया, मैंने यहां पे दो लाइनें लीव करके मैंने लिख दिया एंड वाइल। दिस इज वेयर द लूप एंड्स। आपका लूप यहां पे क्या होता है बच्चों, एंड होता है, फिनिश होता है। जब ये एंड वाइल की स्टेटमेंट आती है तो ये आपको वापस से थ्रू करता है टुवर्ड्स वाइल। अब आप लोग बताएं, सबसे पहले यूजर ने वैल्यू एंटर करी थी नम की, दैट वाज 5। मैंने यहां पे कंपेयर किया था 5 इज नॉट इक्वल्स टू -1, देन आई परफॉर्म द टोटलिंग, द प्रीवियस वैल्यू ऑफ टोटल वाज 0, 0 प्लस 5, द न्यू वैल्यू ऑफ टोटल बिकम्स 5। अब जब एंड वाइल की स्टेटमेंट आई बच्चों, मैं वापस से ऊपर आया, नाउ द वैल्यू फॉर नम। अब नम की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, make sure option is available, feel free to write। now what will be the value for num। अब num की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, अनाया ने बताया सर 5, ठीक है। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन, तुबा, साद, अब्दुल्ला, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स एज वेल। साद ने भी बताया सर 5, तो यस बिल्कुल। तो बच्चों आपके पास फॉर लूप के अंदर, आई टोल्ड यू पीपल, क्या आपके पास बाय डिफॉल्ट क्या होता है, +1 when we were dealing with for loop। तो I told you people, जब ये नेक्स्ट की स्टेटमेंट आती है तो बाय डिफॉल्ट आपके लूप के अंदर कितना इंक्रीमेंट होता है, +1 का। बट दिस इज नॉट द केस विद द वाइल। आपने 5 एंटर करा था, ये वैल्यू क्या रहेगी 5। आपने फिर चेक करा, आपने फिर चेक करा 5 इज नॉट इक्वल्स टू -1, कंडीशन इज ट्रू, आपका लूप चला, बिकॉज ये ट्रू के ऊपर चलता रहेगा, इट्स अ कंडीशनल लूप। नाउ द वैल्यू ऑफ टोटल विल बिकम 5 plus 5, it will become 10। एंड वाइल फिर ऊपर गए, आपने फिर कंपेयर किया, 5 is not equals to -1, कंडीशन इज ट्रू, 10 plus 5, now the value will become 15। after this the value of while बच्चों will become num will become 5 again। अगेन आपने टोटलिंग करी 20, और बच्चों आपके पास नम की वैल्यू अपडेट ही नहीं होगी, इट विल बी 5 थ्रू आउट द कोड। तो आपके पास ये क्या होगा, इट विल बिकम एन इनफाइनाइट लूप। आपका ये लूप कैसा बन जाएगा, इट विल बिकम एन इनफाइनाइट लूप, ऐसा लूप कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। दिस लूप इज नेवर गोइंग टू बी एंडेड। तो बच्चों जब भी हम लोग यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर इनपुट करवाते हैं तो हम हमेशा 2 दफा इनपुट करवाएंगे, हम हमेशा 2 दफा इनपुट करवाएंगे। एक इनपुट तो हम लोगों ने लूप के बाहर परफॉर्म करा, एंड वन इनपुट इज बीइंग परफॉर्म्ड इनसाइड द लूप एज वेल। और एक लूप हम लोग क्या करते हैं, एक इनपुट हम लोग लूप के अंदर परफॉर्म करते हैं, जस्ट टू अपडेट द वैल्यू फॉर नम। अगर हम लूप के अंदर इनपुट नहीं करेंगे तो आपकी नम की वैल्यू बच्चों अपडेट नहीं होगी। आपका अगर कंडीशन ट्रू है, आपका लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, इट विल बिकम एन इनफाइनाइट लूप। सो दैट्स व्हाई हमें लूप के अंदर भी क्या करवाना पड़ता है, इनपुट करवाना पड़ता है। सर लूप के बाहर फिर इनपुट क्यों लिया, लूप के अंदर ही ले लेते। लूप के बाहर बच्चों हम लोगों ने इसलिए लिया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी है कि हमारा यूजर शरारती है, लाइक अनाया, उसने पहली वैल्यू क्या एंटर कर दी, द फर्स्ट वैल्यू एंटर्ड बाय द यूजर वाज -1। सो मैंने यहां पे कंपेयर किया, -1 इज नॉट इक्वल्स टू -1, द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, और आपका लूप चलने से पहले ही क्या हो जाएगा, इट विल बी एंडेड। सो दैट्स व्हाई हमें यहां पे 2 इनपुट लेने होते हैं हमेशा। जब भी आपकी इनपुट के ऊपर आपकी कंडीशन डिपेंड कर रही हो, सो इन अ व्हाइल लूप वी ऑलवेज गो विथ 2 इनपुट्स, वन जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द लूप। सर लूप स्टार्ट होने से पहले क्यों लेते हैं, क्योंकि यूजर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यूजर पहली वैल्यू क्या एंटर कर दे, -1, और आपकी पहली कंडीशन ही क्या हो जाए, फॉल्स, और आपका पहले ही क्या हो जाए, लूप एंड हो जाए बिफोर रनिंग दैट लूप। दैट्स व्हाई दिस लूप इज कॉल्ड प्री कंडीशन लूप। लूप के अंदर हम लोग इनपुट क्यों लेते हैं सर, फिर लूप के अंदर हम लोग इसलिए इनपुट लेते हैं सो दैट द वैल्यू ऑफ नम शुड बी अपडेटेड, वरना आपके पास क्या हो जाएगा, इट विल बिकम एन
फाइनाइट लूप, ऐसा लूप जो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कभी एंड ही नहीं होगा। ठीक है, सो नाउ ये बात बच्चों मैं वर्डिंग की फॉर्म में भी आपको लिखवाऊंगा ताकि आप लोग को याद रहे। और मैंने बच्चों लूप के बाहर क्या किया, मैंने टोटल डिस्प्ले करवा दिया, दैट विल बी आउटपुट टोटल is equals to comma total. So let me repeat the question. Abdullah just joined a bit late. उसको जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर दूं। Abdullah, the question was we need to input a series of numbers that should end with a -1. जब यूजर -1 एंटर करेगा तो आपका लूप एंड हो जाना चाहिए। So this time we need to use a conditional loop. Previously we were using unconditional loop. For loop हम लोग यूज कर रहे थे, like we need to run the loop 40 times, we need to run the loop 10 times, we need to run the loop 8 times, we need to run the loop 80 times. तो हमारे पास नंबर ऑफ आइटरेशंस क्या थी, फिक्स थी। बट नाउ द नंबर ऑफ आइटरेशंस आर नॉट फिक्स। हमें क्या करना है, कंडीशनल लूप है आपके पास, और व्हाइल लूप एंड होता है व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। सो मैंने यहाँ पे कंडीशन क्रिएट करी थी कि -1 के ऊपर आपका लूप एंड हो जाना चाहिए। सो वी पुट द कंडीशन राइट ओवर हियर दैट अगर नम की वैल्यू -1 हो, सो -1 इज नॉट इक्वल्स टू -1, द लूप इज गोइंग टू बी एंडेड। ठीक है, सो बच्चों ये वाली जो बात है, ये जो केस है हमारे पास, ये मैं आप लोग को वर्डिंग की फॉर्म में भी लिखवा देता हूं, सो दैट जब आप लोग रिवाइज कर रहे हो तो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो दिस इज व्हेन इनपुट is depending on condition. So this is only for the while loop. In while loop, if input is depending on condition, we always go with two inputs. The first input is just before starting the loop, and the next one is just before ending the loop. लूप के बाहर क्यों लेते, बिफोर स्टार्टिंग क्यों लेते? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फर्स्ट कंडीशन कैन बी फॉल्स। सो दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, लूप के बाहर एक इनपुट लेते हैं। लूप के अंदर इनपुट क्यों लेते हैं, बिफोर एंडिंग द लूप, टू अपडेट the input, to update the input value। हम लोग लूप बच्चों एंड करने से पहले भी क्या करवाते हैं, एक इनपुट करवाते हैं। दिस इज ओनली फॉर द व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप के अंदर जब भी आपकी इनपुट के ऊपर आपकी कंडीशन डिपेंड कर रही हो, तो वी ऑलवेज गो विद द टू इनपुट्स। एक जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द लूप, क्योंकि यूजर पहली वैल्यू भी माइनस एंटर कर सकता है, आपके पास नेगेटिव एंटर कर सकता है। एंड एक लूप के अंदर क्यों करते हैं, बिकॉज वी नीड टू अपडेट द वैल्यू कि यूजर -1 एंटर करे तो हमारा लूप फिर क्या हो जाएगा, इट विल बी एंडेड। तो दिस वाज बच्चों आवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी परफॉर्म। आई होप आप लोग को अब छोटी मोटी बातें क्लियर हुई होंगी। द स्ट्रक्चर ऑफ द व्हाइल लूप, दैट व्हाइल लूप आपके पास एंड होता है व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स, एंड when our condition is depending on the input, we always go with the two inputs, one before starting the loop and one just before ending the loop to update the value of the input. That's why. ठीक है, सो अगर आप लोगों को बच्चों कोई सवाल है, फील फ्री टू आस्क, वरना क्लियर लिख दें इन द चैट ऑप्शन सो दैट आई कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
तुबा, ऑल गुड. अनाया, अब्दुल्ला, ठीक हो गया. एक्सीलेंट बेटा, जबरदस्त. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज print mac cs 4 times. So we need to just print. हमें सिर्फ प्रिंट करवाना है बच्चों. क्या प्रिंट करवाना है? We just need to print mac cs 4 times, 4 दफा. अब you people must be thinking, sir ये इतना आसान सा वर्ड, mac cs 4 times. This is so simple. So बच्चों, now perform using same question with all 3 loops. तो आपके सिलेबस के अंदर 3 लूप्स है, आपके सिलेबस का पार्ट है. फॉर टू नेक्स्ट, while to end while and repeat until. तो आपको ये काम परफॉर्म करवाना है बच्चों यूजिंग ऑल 3 लूप्स. लाइक यू नीड टू रन ईच एंड एवरी लूप 4 times and you need to print max cs max cs max cs. So let's start करते हैं. सबसे पहले बच्चों, I will be performing this question with for loop. I declared a variable, declare count. I define the data type as integer. For count is equals to 1, 2, 4. The first value for count will be 1. और मैंने यहां पे आउटपुट करवा दिया inside the loop, that will be output mac cs. और मैंने यहीं पे लगा दिया बच्चों next count. So whenever this next count comes, ये आपको वापस से ऊपर लेके जाएगा. Now the value of count will become 2 because by default for loop के अंदर कितना इंक्रीमेंट होता है सर? +1 का. So the value of count will become 2, then 3, then 4. और आप 4 दफा प्रिंट करवा देंगे max cs max cs max cs. ठीक है. So this was from the for loop. Now अब सेम क्वेश्चन हम लोग परफॉर्म करेंगे बच्चों यूजिंग प्री कंडीशन लूप, दैट इज द व्हाइल लूप. अब देखिए, एक चीज आप लोग को बड़ी क्लियरली पता होनी चाहिए. सर क्या पता होना चाहिए? कि व्हाइल लूप एंड कब होता है? व्हाइल लूप आपके पास एंड होता है व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स. ठीक है ना. जब कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो आपका लूप क्या होता है? एंड हो जाता है. तो अब मुझे 4 दफा लूप चलाना है. सो आई विल बी क्रिएटिंग माई ओन कंडीशन. I will be creating my own condition, like when the loop is going to run after 4 times. कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि 4 times बाद हमारी कंडीशन ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाए एंड आवर लूप शुड बी एंडेड. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स सी. आई डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल count. I kept the data type as integer. I initialize the count with 0. Now I put the loop while count is less than 4, do. Inside the loop मैंने आउटपुट करवाया आउटपुट mac cs, and inside the loop I increment the value of count, that is count is equals to count plus 1. और यहीं पे मैंने क्या लगा दिया बच्चों? एंड while.
नाउ लेट्स ड्राई रन द कोड, इस कोड को जरा ड्राई रन करते हैं, चेक करते हैं हाउ दिस कोड इज गोइंग टू वर्क। द फर्स्ट वैल्यू ऑफ काउंट विल बी 0। मैंने यहां पे चेक किया बच्चों, 0 इज लेस देन 4, ट्रू फॉल्स, सर ऑफ कोर्स ट्रू। ट्रू के ऊपर व्हाइल लूप क्या होता है, चलता है। तो मेरा लूप चला, मैंने फर्स्ट टाइम प्रिंट करवाया मैक्स सीएस, नाउ द वैल्यू ऑफ काउंट विल बिकम 0 प्लस 1, दैट विल बिकम 1। एंड वाइल, आप लोग को पता है बच्चों, एंड वाइल आप लोग को कहां लेके जाता है, अगेन बैक टूवर्ड्स द वाइल। नाउ द वैल्यू ऑफ काउंट इज 1, 1 is less than 4, true false, sir true। second time मैंने प्रिंट करवाया, now the value of count becomes 1 plus 1, that is 2। and while I again go up, now 2 is less than 4, condition is sir true। मैंने third time प्रिंट करवाया max yes, the value of count now become 3। and while ऊपर गया मैं, 3 is less than 4, कंडीशन क्या है सर, अगेन ट्रू। मैंने फोर्थ टाइम मैंने प्रिंट करवाया मैक्स सीएस, नाउ द वैल्यू ऑफ काउंट बिकम्स 4। नाउ आई कंपेयर्ड, 4 इज लेस देन 4, कंडीशन बिकम्स फॉल्स। और आपको पता है जब आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका लूप क्या होता है, एंड हो जाता है। तो बच्चों दिस इज हाउ यू कैन रन अ व्हाइल लूप 4 टाइम्स। अब कहानी यहां पे खत्म नहीं होती। सर क्यों नहीं होती कहानी यहां पे खत्म, क्योंकि नाउ लेट्स से, अब अगर मुझे यही लूप, आई नीड टू रन दिस लूप नाउ 400 टाइम्स, अब मुझे 4 दफा नहीं चलाना, आई नीड टू रन द लूप 400 टाइम्स। मुझे बताएं चेंजेस कहां पर आएंगी, कहां पे चेंज करूं मैं, आई नीड टू रन द लूप 400 टाइम्स, नॉट 4 टाइम्स। सो वेयर शुड बी द चेंज, परफेक्ट। साहब ने बताया कि सर नाउ काउंट शुड बी, अनाया ने बताया लाइन 3, सर काउंट शुड बी 4 की जगह क्या कर दें, 400 कर दें, आपका लूप 400 दफा चल जाएगा। सर अब मुझे चलाना ये लूप लेट से 10 टाइम्स, सर 4 की जगह 10 कर दें। मुझे ये लूप चलाने बच्चों 80 टाइम्स, सर 4 की जगह 80 कर दें। सो दिस इज हाउ यू कैन रन द लूप। व्हाइल लूप आप लोग फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशंस के ऊपर भी चला सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है। लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट। नाउ हमें अब ये सेम सवाल परफॉर्म करना है यूजिंग रिपीट अंटिल। वी नीड टू परफॉर्म द सेम क्वेश्चन यूजिंग रिपीट अंटिल। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ अबाउट द रिपीट अंटिल। रिपीट अंटिल लूप बच्चों एक पोस्ट कंडीशन लूप है। इफ आई शो यू पीपल, इट्स अ पोस्ट कंडीशन लूप। ये लूप पहले चलता है और एंड में कंडीशन चेक करता है, और ये लूप एंड होता है व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। तो जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपका ये लूप क्या हो जाता है बच्चों, एंड हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द कोड। ओके, फर्स्ट आई डिक्लेयर द वेरिएबल, वही पुरानी हमारी टेक्निक, that we need to declare the variable first. So declare, all the keywords should be caps. Declare count, and it will be integer. I initialize the count with 0. Now I put the condition repeat. So this is the starting of the loop. ये हमारी लूप की स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग वाला पार्ट है ये हमारे पास। हमारा लूप यहां से क्या होता है, स्टार्ट होता है। अब लूप के अंदर आ गया मैं, इनसाइड द लूप मैंने यहां पे डिस्प्ले करवा दिया आउटपुट मैक cs count is equals to count प्लस 1, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया बच्चों, until count
is equals to 4. So this is the ending of the loop plus this is our condition. ये हमने कंडीशन लगाई है यहाँ पे. और ये लूप एंड होता है बच्चों व्हेन दिस कंडीशन इज ट्रू. ट्रू पे एंड होता है. सो मेरा लूप स्टार्ट हुआ, द फर्स्ट वैल्यू ऑफ काउंट वाज 0. मैंने फर्स्ट टाइम प्रिंट करवाया मैक्स सीएस. नाउ द वैल्यू ऑफ काउंट बिकम्स 1. आई कंपेयर्ड ओवर हियर 1 is equals to 4 and of course that is false. जब ये false होती है बच्चों, ये until आपको वापस से थ्रो करता है towards repeat. Now मैंने second time print करवाया max yes, the value of count will become 2. 2 is equals to 4. Again the condition is false. मैंने third time print करवाया. Now the value of count बच्चों becomes 3. I compared 3 is equals to 4. Condition is again false. मैं ऊपर गया बच्चों, मैंने fourth time print करवाया. Now the value of count becomes 4. मैंने यहाँ पे कंपेयर किया 4 is equal to 4. The condition is true and your loop is going to be ended. अब अगेन वही सवाल, पुराना सवाल. अब यही लूप अगर मुझे 400 times चलाना हो, so where the change will occur, where the change is going to happen, कहां पे चेंज आएगा बच्चों? अब्दुल्ला बोलेंगे अगेन सर कंडीशन. ठीक है. सो अनाया ने बता दिया सर काउंट शुड बी इक्वल्स टू 400. परफेक्ट. तो अगर मुझे ये लूप 400 टाइम्स चलाना है, सिर्फ 4 की जगह क्या कर दें सर 400 कर दें. अगर ये लूप मुझे 10 टाइम्स चलाना है तो सर 4 की जगह 10 कर दें. अगर ये लूप मुझे 20 टाइम्स चलाना है सर 10 की जगह 20 कर दें. अगर ये लूप मुझे 80 टाइम्स चलाना है सर 20 की जगह क्या कर दें 80 कर दें, एंड सो ऑन. So this is how we have created the loop, and this is how बच्चों आप लोग का पोस्ट कंडीशन लूप जो है वो रन करता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आई होप आप लोग को यहां तक सारी चीजें क्लियर है. ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है. जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द चैट ऑप्शन सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड, एंड जस्ट टू make sure you people are attentive and you people are having the right concept. Clear, Anaya, Tuba and Saad, Abdullah. कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, फील फ्री टू आस्क. परफेक्ट, जबरदस्त. नाउ बच्चों लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन. एक और सवाल करते हैं हम जरा यहाँ पे. सर पीडीएफ शेयर कर देगा. श्योर आई विल शेयर दिस पीडीएफ. मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे पीडीएफ शेयर कर दूंगा. Now ji, moving forward. Again, the question is input series of numbers and display the नोट सीरीज. चलें थोड़ा सा चेंज करता हूं. इनपुट 20 numbers and display the highest number input. But there is a condition बच्चों over here. इस सवाल में आपके एग्जामिनर ने छोटा सा आप लोग को नोट दे दिया. नोट परफॉर्म with pre and post condition loops. तो बच्चों आप लोग को ये सवाल परफॉर्म करना है यूजिंग अ प्री कंडीशन लूप एज वेल एज यूजिंग अ पोस्ट कंडीशन लूप एज वेल. तो दोनों मतलब आपको प्री कंडीशन लूप कौन सा होता है,
दैट इज व्हाइल, डू एंड व्हाइल। आपको व्हाइल से भी करना है और आपको यही सवाल रिपीट अंटिल से भी परफॉर्म करना है। सो वी नीड टू परफॉर्म द सेम क्वेश्चन ट्वाइस, दोनों दोनों लूप से करना है हमें परफॉर्म। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले व्हाइल से करवाता हूं। So we need to input 20 numbers, like we need to run the code 20 times. 20 दफा आपको क्या करना है, आपको कोड को रन करना है। तो अब आप लोग को पता है सर, ट्रिक पता है हमें, हम अपने कोड को 20 दफा रन कर सकते हैं। कैसे? आई डिक्लेयर द वेरिएबल, डिक्लेयर काउंट num highest. I initialize them. I define the data type as integer. आपको पता है whenever we need to perform counting, whenever we need to perform highest, we initialize them. So count will be equals to 0 and highest will be equals to 0. Now I put the while loop over here. मैंने अपना while loop बच्चों यहां पे स्टार्ट करा. That will be while count is less than 20 do, और इनसाइड while loop मैंने यहां पे परफॉर्म करा count is equals to count प्लस 1, और मैंने यहां पे लगा दिया बच्चों एंड while. मैंने यहां पे लिख दिया, लेट्स से मैंने यहां पे लिख दिया एंड while. अब देखिए ये लूप जो है ना मेरा, दिस लूप इज गोइंग टू रन, ये आपका लूप फिक्स 20 टाइम्स चलेगा. अब लूप के अंदर मैं जो भी करूं मेरी मर्जी, लेकिन ये जो मैंने कंडीशन क्रिएट कर दी बच्चों, विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन माय लूप इज गोइंग टू रन 20 टाइम्स, फिक्स्ड है. अब ये जो आपने ये काम किया ना, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, यू कैन परफॉर्म ओवर हियर. आप इसको यहां पे भी कर सकते थे, आप 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 यहां पे भी कर सकते थे. यू कैन परफॉर्म दिस टास्क एनीवेयर इनसाइड द कोड, कहीं पे भी इंक्रीमेंट करवा दें, नो इश्यूज. बेहतर ये होता है कि फॉरन स्टार्टिंग में ही करवा दें ताकि एक टेंशन निकल जाए, ताकि आप कभी भूल ना जाए. ठीक है, अब हमें करना क्या है लूप के अंदर? सर लूप के अंदर तो हमें कुछ नंबर शंबर लेना था. हियर यू गो, वी नीड टू इनपुट 20 numbers and display the highest. So I think we are good. मैंने पहला नंबर यहां पे इनपुट लिया. आप सबको पता है द फॉर्मूला इज आउटपुट enter a number input num. Now I need to place the formula for the highest. मैंने आप लोग को बताया था हाईएस्ट का फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा. सर क्या था वो फॉर्मूला? सिंपल सा था, इफ num is greater than highest, then highest will be updated to num, and this will be and if, और यहीं पे क्या हो जाएगा बच्चों आप लोग के पास, यहीं पे क्या हो जाएगा आप लोग के पास, इट विल बी एंड while एज वेल. अब ये एंड while आप लोग को लेके जाएगा वापस से टुवर्ड्स द टॉप. ये एंड while आप लोग को वापस से लेके जाएगा बच्चों टुवर्ड्स द टॉप. अब आपके पास काउंट की एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, आप अगेन एक नंबर इनपुट करवाओगे, आप चेक करवाओगे, आप यू विल बी अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट, एंड दिस लूप इज गोइंग टू रन अगेन एंड अगेन. ये आपका लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा. कितनी दफा चलेगा? 20 टाइम्स. एंड द वैल्यू, अगर चले मैं यहाँ पे एज्यूम भी कर लेता हूं, लेट्स से मैंने यहाँ पे नम की वैल्यू एंटर कर दी 22 एंड लेट्स से 8.
10, 20 and 8. So first value is 10. I compared over here. 10 is greater than 0. Condition is true. The value of highest will become 10. अब काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. आपने ऊपर गए कंपेयर किया. 1 is less than 20. The condition is true. Now the value of count will become 2. मैंने सेकंड नंबर बच्चों इनपुट करवाया. That will be 20. 20 is greater than 10. Condition is true. Now the value of highest will become num. And num क्या है आपके पास? 20. अब ऊपर जाऊंगा बच्चों. मैंने अगेन कंपेयर किया. 2 is less than 20. Condition is true. मैंने थर्ड नंबर इनपुट करवाया. That will be 8. मैंने यहाँ पे कंपेयर किया. That 8 is greater than 20. Condition is false. तो मैं डायरेक्टली कहां जाऊंगा? टूवर्ड्स एंड इफ. फिर मैं ऊपर जाऊंगा बच्चों. नाउ द वैल्यू ऑफ काउंट इज 3 एंड सो ऑन. सर ये लूप आपका चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा और हर दफा हम काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करवाते रहेंगे और मैं एक नंबर इनपुट करता रहूंगा एंड जो भी हाईएस्ट होगा आई विल बी स्टोरिंग दैट वेरिएबल इन द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट. और लूप के बाहर मैं ये आउटपुट करवा दूंगा. दैट विल बी आउटपुट द हाईएस्ट वैल्यू is equals to comma highest. And we are done with the while loop over here. Now before I move forward, we have a question. Sir, count plus 1 वाली statement अगर हम and if के बाद डाल सकते हैं. yes, you can place anywhere inside the code. and if के बाद लगा दो, ऊपर स्टार्टिंग में लगा दो, कहीं पे भी लगा दो. योर कॉल, मर्जी आपकी. ठीक है, यू कैन प्लेस. नेक्स्ट नंबर विल बी कंपेयर्ड विद 20 बिकॉज अनाया बेटा देखिए अपडेट नहीं हुई ना हाईएस्ट की वैल्यू. मैंने यहां पे जब कंपेयर किया 8 इज ग्रेटर देन 20. द कंडीशन इज फॉल्स. तो डायरेक्ट एंड इफ हो गया. तो हाईएस्ट की वैल्यू क्या रही? आपके पास हाईएस्ट की वैल्यू 20 है, अपडेट नहीं हुई. तो वॉट एवर द वैल्यू, जो भी हाईएस्ट वैल्यू अगर होगी तो अपडेट होगी, वरना वो पुरानी वैल्यू ही रहेगी आपकी. इट वोंट बी अपडेटिंग द वैल्यू. ठीक है. अब हमें सेम क्वेश्चन बच्चों परफॉर्म करना है यूजिंग रिपीट अंटिल. तो इजी टास्क है बच्चों, बहुत सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी. तो मैंने स्टार्टिंग के अंदर वेरिएबल्स पिक कर लिए. दे विल रिमेन सेम. नाउ व्हाइल की जगह क्या आता है? यहां पे वी हैव द स्टेटमेंट ऑफ रिपीट. इनसाइड बच्चों ऑल द स्टफ विल रिमेन सेम. पूरा स्टफ आप लोग का सेम रहेगा इनसाइड भी. आपके पास आखिर में कंडीशन आ जाएगी रिपीट के अंदर. दैट विल बी अनटिल काउंट इज इक्वल्स टू 20. और लूप के बाहर बच्चों आप लोग सेम क्या करवा देंगे? प्रिंट करवा देंगे. तो मैंने सेम क्वेश्चन रिपीट अंटिल से भी क्या किया बच्चों? I perform the same question using repeat until as well. All the stuff because आपको पता है count को initialize करवाना है 0 से count is equal to count plus 1 until count is equals to 20. Now your loop is going to run 20 times. हर दफा मैं एक नंबर इनपुट करवाता रहूंगा, मैं कंपेयर करता रहूंगा. Let's erase this stuff. ये सब मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए किया था. हर दफा आपका लूप चलता रहेगा. Your loop is going to run 20 times. And the value of the highest will be stored into the variable that is called highest. और आखिर में बच्चों आप लोग वो highest डिस्प्ले भी करवा दोगे. So बस आप लोग को छोटी छोटी बातें याद रखनी है. that while loop end होता है when the condition is false and repeat until is ended when the condition is true. ठीक है. अब बच्चों बहुत पढ़ लिया हम लोगों ने. लेट्स प्ले अ गेम. एक गेम खेलते हैं जरा यहां पे. अब
आप लोग को जल्दी जल्दी आंसर बताने यहाँ पे कि व्हाट विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट कंडीशन। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट कोड। आप लोग को सिर्फ मुझे ये बताना है बच्चों के स्क्रीन पे डिस्प्ले क्या होगा। जल्दी से मैक्स चैट पे लिख के बताएं मुझे। साथ ने बता दिया, जबरदस्त साथ, जबरदस्त। एवरीथिंग आफ्टर 12 इंक्लूडिंग इट, जबरदस्त साथ। एनीवन एल्स, कोई और बच्चा अगर बताना चाहे। 12 ऑनवर्ड्स, ठीक है, जबरदस्त। तो बच्चों, अच्छा एक बात तो बताएं जरा, व्हाइल लूप एंड कब होता है? जब कंडीशन ट्रू फॉल्स? बस सिर्फ ये बता दें मुझे आप लोग, व्हाइल लूप एंड कब होता है? व्हेन द कंडीशन इज ट्रू या फॉल्स? फॉल्स के ऊपर आपका व्हाइल लूप एंड होता है। परफेक्ट। तो आई चेक फॉर द फर्स्ट कंडीशन, द वैल्यू ऑफ काउंट इज 10। मैंने यहां पे चेक करा, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। ये ट्रू है फॉल्स है? ये ट्रू है फॉल्स है कंडीशन? मैं बोल रहा हूं 10 इज ग्रेटर देन 12, ट्रू फॉल्स? फॉल्स। तो बच्चों आपका लूप चलेगा ही नहीं, एंड हो जाएगा, खत्म। ये लूप चलेगा ही नहीं। इट वॉज अ ट्रिक क्वेश्चन। ये लूप चलेगा ही नहीं, बिकॉज द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। लूप चलने से पहले ही एंड हो जाएगा, बिकॉज दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ प्री कंडीशन लूप। ठीक है ना? ट्रू है। 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। अगर ये साथ, अगर ये बात ट्रू है तो बेटा आई विल बी मीटिंग विद योर मैथ्स टीचर। मैं तुम्हारे मैथ्स के टीचर जरूर मिलूंगा और फिर डिस्कशन होगा एक अच्छा सा। ठीक है, सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी पहली कंडीशन ही फॉल्स है और फॉल्स के ऊपर ये लूप आपका क्या हो जाएगा? इट विल बी एंडेड। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अच्छा जी, नाउ बच्चों टेक योर टाइम, व्हाट विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन? अब स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा? टेक योर टाइम, बताएं जरा मुझे। ठीक है, वी हैव वन राइट आंसर। परफेक्ट, वी हैव, सब बच्चों ने अब सही जवाब दिया, एक्सीलेंट बेटा। देखिए, द वैल्यू ऑफ काउंट विल बी 10। 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, द कंडीशन इज, मैंने डू लगाना भूल गया भाई, द कंडीशन इज ट्रू। मैंने यहां पे आउटपुट करवा दिया 10। नाउ द वैल्यू ऑफ काउंट विल बिकम 11। एंड वाइल मुझे ऊपर गया, नाउ आई कंपेयर्ड 11 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन इज ट्रू। मैंने 11 डिस्प्ले करवाया, द वैल्यू बिकम्स 12। मैंने कंपेयर किया, 12 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन इज ट्रू। मैंने 12 डिस्प्ले करवाया। बच्चों दिस विल गो ऑन, आई विल बी डिस्प्लेइंग, ये आपके पास डिस्प्ले करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। कब तक करता रहेगा?
बिकॉज आपके पास कभी भी आपकी वेरिएबल की वैल्यू, काउंट की वैल्यू कभी भी 2 से कम नहीं होगी, आपकी कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी, एंड इट विल बिकम एन इनफाइनाइट लूप। आपके पास ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट कंडीशन, लेट्स सी। ओके जी, सो नाउ व्हाट विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन? अब क्या डिस्प्ले होगा बच्चों? टेक योर टाइम, बताएं जरा मुझे। साहब ने बताया सर 2468, ठीक है, बाकी बच्चों को भी टाइम देते हैं जरा। ठीक है, ठीक है। तुबा बेटा आप भी आंसर नहीं कर रही। तुबा तुबा, अच्छा शी वेंट ऑफलाइन। ठीक है, सो नाउ द फर्स्ट वैल्यू ऑफ काउंट बच्चों विल बी 2। कंडीशन इज ट्रू, मैंने यहां पे डिस्प्ले करवाया 2। नाउ द वैल्यू ऑफ काउंट बिकम्स 4। मैं ऊपर गया, आई कंपेयर्ड, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 8, कंडीशन इज ट्रू। मैंने 4 डिस्प्ले करवाया, अब 6 हो जाएगी वैल्यू। आई कंपेयर्ड 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 8, कंडीशन इज ट्रू। मैंने 6 डिस्प्ले करवाया बच्चों, नाउ वैल्यू बिकम्स 8। 8 is less than equals to 8, condition is true, मैंने 8 डिस्प्ले करवाया, now the value becomes 10। 10 is less than equals to 8, condition becomes false, और आपका लूप क्या हो जाएगा? It will be ended। Perfect। So this was a small game बच्चों that we played, और आज इसको अब यहीं तक होल्ड करते हैं। इंशाल्लाह ताला कल की क्लास का इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। कल हम लोग डील करेंगे बच्चों अगेन कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आप लोग को वाइल लूप के, एंड वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड एरेज। तो कल हम लोग एरेज भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड कल की क्लास भी ऑनलाइन ही कर लेंगे। आई थिंक आई एम मोर कंफर्टेबल इन दिस बैच। ऑनलाइन अच्छा हो जाता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, और आप लोग अपने सवाल भी आराम से पूछ लेते हैं, एंड आई थिंक दैट्स फाइन। कैंपस में आप लोगों को पता है थोड़े से इश्यूज भी हो जाते हैं, कनेक्टिविटी एंड ऑल, एंड आई एम अनेबल टू कास्ट, इंटरनेट भी थोड़ा स्लो चल रहा होता है, ठीक है ना। हाँ, बाकी जब रिक्वायरमेंट होगी तो आई विल बी कॉलिंग यू पीपल ऑन कैंपस एज वेल, ठीक है। अच्छा, मोर ओवर संडे वाले दिन बच्चों आप लोग का क्विज है। दिस इज योर थर्ड क्विज, एंड द चैप्टर दैट इज कमिंग इन द क्विज इज वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। अगेन यू विल बी हैविंग द होल डे, सुबह 12 बजे से लेकर रात 12 बजे के दरमियान आपको कोई भी बीच में 30 मिनट्स अपने निकालना, एंड यू नीड टू गिव दैट क्विज, ठीक है। सो अच्छा क्विज देगा, तैयारी अच्छी करेगा, एंड आज इसको बस हम लोग अब यहीं तक होल्ड करते हैं। इंशाल्लाह वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड इन आवर नेक्स्ट सेशन, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।